Yes. Uh, so this is the application we are going to build today, and we would learn about custom functions, custom code, actions and widgets, then Firebase integration and authentication. We have already covered this in the previous session, but we would also see it today as well. And then we would go to Play Store deployment. So let me just give a brief demo of it. Let's sign in. And you have this home screen. So basically इस ऐप में क्या हो रहा है, आप जितने भी आपके टास्क है या फिर टू डूज है वो स्टोर कर सकते हो. सपोज आपके फ्रेंड ने एक आर्टिकल भेजा आपको, एंड यू डोंट हैव द टाइम टू रीड इट राइट नाउ. सो आप यहाँ पे उसको एज अ टाइटल एंड लिंक देके स्टोर कर सकते हो, एंड वो उसका शॉर्टन यूआरएल क्रिएट कर देगा, जो कि बाद में आप उसको रीड कर सकते हो. तो हम ये वाली एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड लेट्स गेट दिस असाइड फॉर नाउ एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट. तो आई वांट कि सभी डैशबोर्ड पे आ जाओ अपने फ्लटरफ्लो के. सो आप फ्लटरफ्लो की वेबसाइट पे जा सकते हो एंड लॉग इन इनटू इट. आपको ऐसा कोई डैशबोर्ड दिखेगा वे यू कैन क्रिएट योर एप्लीकेशन. तो मैं फटाफट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यू कैन डू इट अलोंग साइड में. So let's create the app and let's name it Do Later. किसी के पास और कोई नेम रिकमेंडेशन है तो बता दो अभी. Otherwise we would continue with this. Okay, so click on Start Building. And यहाँ पे आपके पास Flutter Pro का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. So here you have the canvas in between, and right side पे properties panel है, and left side पे आपके widgets है. तो widgets बेसिकली एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप हियर टू क्रिएट द यूआई. सो किस किस ने ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है? आप हैंड रेज कर दो या फिर रिएक्ट कर दो. ओके, मीनाक्षी हैज डन. या श्योर, सो गुड. ओके, सो वंस द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी शेयर यू द स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन. So I have created this doc, and इसमें सारे steps है to create this application. And also जितने भी assets है, कोई code का piece भी need, you can copy paste it from here. तो मैं chat में डाल दूँगी. Copy and paste. Yes. तो बेसिकली मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर रखे कि हमको क्या क्या फीचर्स इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, क्या लॉजिक होने वाला है, वो सब इस डॉक के अंदर है. तो बाय चांस अगर आपका इंटरनेट इशू होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन रेफर टू दिस डॉक. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन द डिजाइन सिस्टम, जो हमने सेक्शन 2 में देखा था. तो गो टू दिस टैब, डिजाइन, and go to colors and explore project colors. And आपको जौन सा भी अच्छा लग रहा है, you can go to the explore button, and यहाँ पे काफी सारे themes है. तो let's just quickly select one of the themes. I like this one, so
click on the checkbox and save changes. तो अब ये सारे जो कलर स्कीम्स हैं ये आपकी पूरी एप्लीकेशन में डिफाइन हो जाएगा. So our first step is completed. We have created the project and we have defined the design system. Now second thing is defining the Firebase. Okay. So ऋषभ बेसिकली अभी तक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है एंड हमने डिजाइन सिस्टम में कलर्स डिफाइन करे हैं. ओके यार. यस. तो सबने ये चीज फॉलो कर दी. फटाफट रिएक्ट कर दो. गुड 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 गुड. तो सेकंड स्टेप इज यस नमन. नमन आपको कोई डाउट है? ओके ओके नो इश्यूज. So let's go to settings. So जो हमारा second step होगा that would be to connect with the Firebase. So go to Firebase and create project. यहाँ पे project का name define कर दिया है. We have the project ID and let's give it Mumbai. तो जो हमारा server है वो मुंबई में based है and sign in with Google. Choose your Firebase account. And this would take about 1 to 2 minutes and हमारा Firebase से project create हो जाएगा. Also meanwhile let's go to authentication. So go to authentication, app settings के अंदर authentication है and enable authentication. Authentication type Firebase. तो basically Firebase integrate करने के लिए मैंने दो steps करे हैं अभी. First is go to settings, Firebase, okay, and create project. Second is go to authentication and select enable authentication. Okay, so I have reached the quota to create the projects. Let me delete some projects. I have too many projects on Firebase. So let's try to create again. अच्छा किस किस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है? एनीबडी जिसने फायरबेस के साथ कनेक्शन कर दिया हो या अभी भी वो लोड ही हो रहा है? अच्छा सो इफ आई गो टू द डॉक हमारा स्टेप 1 हो चुका है. क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड सेट द डिजाइन सिस्टम. देन इनेबल फायरबेस में वी आर क्रिएटिंग द फायरबेस प्रोजेक्ट राइट नाउ. एंड जब ये हो जाएगा तो हम जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स पे क्रिएट करके अपनी एंड्रॉइड iOS फाइल्स ऐप्स ऐप के साथ कनेक्ट कर देंगे. Also enable Firebase, we have done this. So let's go again to the dashboard and let me choose a different ID. Select all, continue. Yes, so this time it should create the project. अभी हुआ किसी का प्रोजेक्ट क्रिएट?
Okay, nice. So you guys can go to generate config files and click on this. By the way, how many of you have an Android device here and they have an account on Play Store? I mean the normal user account. आप हैंड रेज कर दो जिन जिन के पास एंड्रॉयड है एंड दे हैव द यूजर प्ले स्टोर अकाउंट नॉर्मल प्ले स्टोर अकाउंट ओके यस can you share your email ID with me with which you are logged in into the Play Store? So basically, I have deployed this application on Google Play Store inside the internal testing mode, and you can be the tester of that application. So you can download it from the Play Store. Okay. Yes, हमारा project create हो चुका है Firebase पे, and now let's quickly click generate config files. Yes, तो हमारा config file generate हो चुकी है. Now let's go to enable auth on Firebase. तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको Firebase प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा. So if I change my email ID, yes. So I am navigated to the authentication page of my project and it's gets click on get started. हाँ अब हमारे पास काफी सारे साइनिंग प्रोवाइडर्स आ रहे हैं. वी हैव द गूगल ईमेल पासवर्ड. सो लेट्स quickly go to email password and enable save. Now come back to the platform. ये स्टेप आपको समझ में आ गया ना? Go to enable auth on Firebase. It will redirect you to the Firebase console and you can enable the email password. So we have done this step. एक छोटी सी चीज बची है बट वी वुड डू दिस आफ्टर द क्रिएट ऑथ स्क्रीन. इतना हो चुका है सबका. आप एक बार रिएक्ट कर दो. ओके so now let's quickly create the auth screen. Go to this add page and component. तो basically second tab है यहाँ पे. I'm here and click on add page and select a template. So we are going to use a template. Click on auth and inside auth हमारे पास काफी सारे templates है but I would choose this one, the first one, because इसमें sign in and sign up दोनों के options है. Click on my theme and let's rename it as auth screen and create page.
So with this हमारा ऑन स्क्रीन रेडी है. Let me quickly change this text. So इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल है. सो गो टू टेक्स्ट एंड यहाँ पे लेट्स चेंज इट टू रेट. यस. So we have sign in, we have sign up, and अगर मैं इसको expand करता हूँ तो let's go to the third tab. तो ये बेसिकली है widget tree. जितना भी हमारा स्क्रीन का UI का layout है, that we can visualize it. So if I click on create account, you see यहाँ पे एक action defined है already. Click on actions here, and you can see on tab, auth, create account, email, password. तो ये क्या करता है, जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे it would create an account for us. किस किस की ऑन स्क्रीन रेडी है? ओके. सो ऑथेंटिकेशन में बस एक छोटा सा रास्ता बचा. लेट्स गो टू सेटिंग्स एंड ऑथेंटिकेशन एंड हमें बताना है व्हाट विल बी इनिशियल पेज एंड द ऑन लॉग्ड पेज. सो एंट्री पे वी वांट टू शो द ऑन स्क्रीन एंड एक बार जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा वी टू नेविगेट द यूजर टू होम पेज. सो दिस इज डन. ऑल्सो आप देखो ऊपर के सारे एरर जा चुके हैं अब. सो आवर ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड. तो किस किस का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है? ओके नाइस. So we have created the project, we have enabled the Firebase, and we have also created the on screen. Now let's go to Firebase corrections. Go to the application and inside Connect, we have this first tab, Firestore. So basically Firestore is like a database where you can store your data in document format. So click on this plus icon and अब हम अपने schemas and corrections define कर सकते हैं. So let me make the first correction name as users and create. Create करने के पे ये आपसे पूछेगा कि ये जो user correction आप create कर रहे हो, is it equal to the by default user that the Firebase creates? And we would click on yes. And जितने भी user के basic details होते हैं वो ये यहाँ पे add कर देगा. So we have the user correction. So basically I clicked on this press icon, named it as users and clicked on yes. Now we need to define the task correction. For that, click on the press icon and let's name it as task and create. Yes. कितनों का इतना हो चुका है? You have created an empty correction for tasks. Okay, nice. So now let me go back to the documentation. So inside task, हमारे पास ये सारी fields है. We have user ID, we have title, link, is done and date. तो हम इसको फटाफट ऐड कर देते हैं अपने करेक्शन के अंदर. So go to start from scratch and सबसे पहले we had title and this is a string and click on the arrow. Then we have user ID. So user ID is basically a document reference. जो हमारा user document है हम उसे reference provide करेंगे यहाँ पे. So reference type is users and add it. Then we have link. It is a string. Add this one as well. Then we have date. किस दिन हमने task add करा था and it is a
डेट टाइम। इसके बाद वी हैव, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इज डन। एंड ये है अपना बूलियन, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यस, तो हमारी सारी फील्ड डेटा आइटम्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। वंस दिस इज एडेड, आप एक बार थम्स अप कर देना। ओके, लेट मी रीचेक, और कुछ ऐड तो नहीं करना था। नो, वी हैव टाइटल, यूजर आईडी, लिंक, डेट एंड इज डन। सो हमारा स्टेप नंबर 4 भी हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 5, दैट इज कस्टम कोड्स। So this is the main agenda of today. So if you go to this icon, so this is the sixth icon, custom code. तो कस्टम कोड बेसिकली होता क्या है? आपको कभी कभी अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ कस्टम या एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए होती है दैट बाय डिफॉल्ट फ्लटरफ्लो कैन नॉट प्रोवाइड। सो उसके लिए हम कस्टम फंक्शंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, आप एक टेम्परेचर कन्वर्जन ऐप बना रहे हो एंड यू हैव द टेम्परेचर इन सेल्सियस बट आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो लॉजिक है दैट यू वुड राइट इन कस्टम फंक्शंस। कस्टम फंक्शंस बेसिकली एक इनपुट लेते हैं, इनपुट को प्रोसेस करते हैं एंड गिव द आउटपुट। देन यू हैव कस्टम विजेट्स। तो सपोज आपके पास एक कंपोनेंट है दैट टेक्स सम वैल्यूज एंड प्रिंट्स या displays that value in a UI in a beautiful way। तो उस चीज को, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए वी वुड यूज द कस्टम विजेट्स, जिसमें हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे एंड उस आर्गुमेंट के हिसाब से विजेट्स अपना फॉर्म देगा। थर्ड वन इज कस्टम एक्शंस। तो सपोज आपके पास कोई बटन है एंड ऑन टैप यू नीड टू डू समथिंग। अब वो फायरबेस कॉल हो सकती है, वो कोई किसी एपीआई कॉल हो सकती है, राइट? बट maybe it's something custom that is not provided in the Firebase on actions. So that you can define in custom actions. तो आज हम custom functions भी देखेंगे and custom actions भी देखेंगे। So let me go to the document, and first is custom functions. So it, yeah, जो date parameter है दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब हमारे पास डेट टाइम वेन्यू है, आई मीन डेट है एंड टाइम है, देन वी हैव एंटायर थिंग दैट सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, बट वी डोंट नीड दैट। हमें बस नॉर्मल दिखाना है डेट एंड द मंथ, लाइक 12th ऑफ जुलाई। तो वो चीज़ करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो गो टू प्रेस आइकन एंड सेलेक्ट अ फंक्शन। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है, मुझे फॉन्ट इंक्रीज करने की नीड तो नहीं है ना? It's clear. Okay. So now let's rename this function. On the top you have the function name. तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं format date type। तो ये हमारे फंक्शन का नेम है and let's define an argument। तो click on this। argument is basically जो हम input देने वाले फंक्शन के अंदर, and its name है date time and इसका टाइप होगा date time। yes, तो you see यहाँ पे ये चीज़ अपडेट हो गई। तो बेसिकली इस डेट टाइम को हमें कन्वर्ट करना है एक फॉर्मेट में। नाउ इफ यू सी द डॉक, मैंने इसका कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेट टाइम नल है या नहीं। इफ इट्स नल वी वुड रिटर्न इट, एंड अगर अगर वो नल नहीं है तो हम डेट फॉर्मेट का यूज करके उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे।
अब ये जो डेट फॉर्मेट है ये आता है इंटर पैकेज से, तो हमें इंटर पैकेज भी ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो लेट मी जस्ट कॉपी दीज टू लाइन्स, सॉरी, and let me paste it here. So you can also do this, आप बस ये दो लाइन्स कॉपी कर लो and paste it here. तो सबसे पहले हम चेक करें कि डेट नल तो नहीं है, एंड इफ इट्स नॉट हम उसे फॉर्मेट करते हैं। तो सी यहाँ पे इंटर पैकेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो वी डोंट नीड टू import it मैन्युअली। एंड एक बार जब ये हो जाए क्लिक ऑन सेव फंक्शन। ओके, सो बेसिकली सेव के साइड में बटन है टू चेक फॉर एरर्स। आप इसको क्लिक करके अपने कोड को एक बार रीचेक कर सकते हो कोई एरर तो नहीं है, एंड जो टॉप पे एरर आया था वो उससे रिमूव हो जाएगा। सो किस किस का फंक्शन रेडी है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्लिक ऑन द प्लस आइकन, गो टू फंक्शंस एंड क्रिएट अ न्यू फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन का नेम चेंज करेंगे, देन हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एंड जो हमारा लॉजिक वाला पार्ट है वो हम ऐड करेंगे फंक्शन के बीच में। देन यू कैन चेक कि कोई एरर तो नहीं है कोड में, एंड यू कैन सेव द फंक्शन। सो जिस इसका फंक्शन रेडी है, यू कैन रिएक्ट। ओके, नाइस। Now let's see what's the next thing. Next is creating the URL shortener. तो इफ यू सी हमारे ऐप के अंदर जब भी हम URL ऐड करते हैं वो शॉर्टन होके दिखता है हमें एप्लीकेशन के अंदर। तो अब हम ये वाली फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। फॉर दिस वी नीड टू क्रिएट अ कस्टम एक्शन। अब हमें एक्शन क्यों क्रिएट करना है, बिकॉज ये चीज़ होगी ऑन टैप पे। तो जब भी हम प्लस आइकन को टैप करेंगे वो हमारे यूआरएल को शॉर्टन करेगा एंड फिर वो फायरबेस में स्टोर करेगा। तो वी डिफाइन एन एक्शन, तो गो टू द प्लस आइकन एंड एक्शंस। तो नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द कोड। तो ये है हमारा कस्टम एक्शन का कोड। सबसे पहले हमने HTTP पैकेज इंपोर्ट करा है। Then we have this function that returns a future of string. So because हम एक API कॉल कर रहे हैं तो it is asynchronous, वो कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स देगी। तो इसलिए हमने फ्यूचर डिफाइन करा है, एंड इट वुड बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग। देन इनपुट के अंदर अंदर हमने एक URL इनपुट दिया है, तो इस URL को हम एज अ इनपुट कंसीडर करेंगे एंड वी वुड पास इट टू द API कॉल। तो API कॉल हम कर रहे हैं टाइनी URL को। तो दिस इज द बेस URL, एंड इसमें URL पैरामीटर के अंदर हमने अपना URL प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो API कॉल है दिस विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स, एंड अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है तो विल रिटर्न द रिस्पॉन्स बॉडी, अदरवाइज विल रिटर्न अ एरर। So let's quickly copy this code and paste it here. यहाँ पे एक डैश भी आ गया है, तो आप डैश रिमूव कर देना।
about HTTP package, it's imported. अच्छा कितनों का इतना हो गया, उन्होंने कोड को कॉपी कर दिया एंड समझ लिया कोड कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, तो अबाउट HTTP पैकेज मैं बता देता हूँ पैकेजेस हम मेंटेन कैसे करते हैं। गो टू दिस टैब, मैनेज प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, क्लिक ऑन दिस एंड आप प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में आ जाओगे। तो दीज आर ऑल द डिपेंडेंसीज ऑलरेडी एडेड है प्रोजेक्ट में। सी इंटेल ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में एडेड है। So let's add another pub dependency called HTTP and add. So इसने HTTP को ऐड कर दिया। Now let's go back to our functions. फंक्शन का हम नेम भी रीनेम कर देते हैं। Let me copy this, shorten URL and paste it here. तो हमने एक्शन का नेम चेंज कर दिया है एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन सेव एक्शन। तो सेव एक्शन पे हमें बता रहे कि आपके पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे बिकॉज हमने आर्ग्यूमेंट्स तो अभी डिफाइन ही नहीं करे। बट इफ आई क्लिक ऑन यस, ये मेरे लिए सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। लॉन्ग यू आर एज द आर्ग्यूमेंट डिफाइन हो चुका है एंड रिटर्न टाइप भी यहाँ पे ऐड हो गया एंड मेरा कस्टम एक्शन सेव हो गया। सो किस किस का कस्टम एक्शन सेव हो गया? सो हमने कस्टम फंक्शन देखा एंड कस्टम एक्शंस। जैसे ये दोनों चीजें हो जाए आप रिएक्ट कर देना। नाइस। तो इन स्टेप 5 हमने कस्टम कोड कवर करा, हमने कस्टम फंक्शन बनाया टू फॉर्मेट डेट टाइम एंड उसके बाद फिर हमने कस्टम एक्शन बनाया जो कि यूआरएल को शॉर्टन करेगा। तो नाउ इट्स द होम स्क्रीन यूआई, डिक्टेशन नॉट फॉर्म। आपने एक्शन नेम एंड जो आपका यहाँ पे फंक्शन नेम है वो सेम है या डिफरेंट है, एक बार ये चेक करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बनाएंगे होम स्क्रीन का यूआई। तो मैं एक बार फटाफट आपको होम स्क्रीन का यूआई दिखा देता हूँ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अपने पास एक ऐप बार है, देन वी हैव एन रो के अंदर वी हैव ऐड टाइटल एंड ऐड लिंक एंड वी हैव अ आइकन बटन, देन वी हैव अ टेक्स्ट कॉल्ड टास्क। First let me go to widget palette, then we have second tab and यहाँ पे हम जाएंगे होम स्क्रीन पे। तो फटाफट let me change the text, do later and now let's go to the widget tree and अब हम ना यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। सो कॉलम के अंदर लेट्स फर्स्ट ऐड एन रो। तो टॉप पे हमारे पास रो ऐड हो गई है एंड इनसाइड दिस रो हमें तीन आइटम्स चाहिए। फर्स्ट इज अ टेक्स्ट फील्ड, click on this, now add another text field and now add another icon button. Yes,
सो मैंने एक रो डिफाइन करी एंड रो के अंदर मैंने तीन आइटम्स डाली है, टू टेक्स्ट फील्ड्स एंड एन आइकन बटन। लेट मी थोड़ा सा यूआई ठीक कर देता हूँ। तो रो को मैं क्लिक करूंगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड पैनल में लेट्स गिव सम पैडिंग। तो इस पैडिंग वाले सेक्शन में टॉप पे ऐड 20 एंड सेम बॉटम पे भी लेट्स ऐड 20 एंड सेम फॉर लेफ्ट एंड राइट। अब मैं टेक्स्ट फील्ड 1 को क्लिक करूंगा एंड एकदम टॉप पे वी हैव द नेम। तो लेट मी रीनेम इट टू टाइटल, टाइटल फील्ड। एंड अब थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। सो यू हैव द हिंट प्रॉपर्टी, शैडोज के नीचे यू हैव द हिंट प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे आप हिंट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सो हिंट टेक्स्ट इज बेसिकली जो, जब आपका टेक्स्ट पे सेलेक्टेड नहीं है, कुछ पे टाइप नहीं हो रहा है, तो जो टेक्स्ट वहाँ पे दिखना चाहिए दैट इज अ हिंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम डालेंगे एड टाइटल एंड आई वांट कि थोड़ा सा पैडिंग हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो सेलेक्ट द फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड एंड गो टू पैडिंग एंड राइट साइड से हम 10 की पैडिंग दे देते हैं। अब हम सेम प्रोसेस दूसरे के लिए फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द सेकेंड वन, चेंज द नेम, लिंक फील्ड एंड नाउ लेट्स गो टू हिंट टेक्स्ट, चेंज इट टू एड लिंक। उसके बाद लेट्स गो टू पैडिंग एंड राइट से हम पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे ऑफ 10। यस, तो हमने एक रो डिफाइन करा। इनसाइड रो वी हैव a add title, then add link and we have a बटन, आइकन बटन। अब आइकन बटन का आइकन भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो गो टू आइकन बटन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में वी हैव द आइकन प्रॉपर्टी। तो क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स सर्च फॉर प्लस आइकन एंड यहाँ पे आप आइकन चूज कर लो प्लस का एंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो जैसे ही ये स्टेप हो जाए आप रिएक्ट कर देना। ओके, और कौन कौन अभी ये कर रहे हैं? अगर कोई कर रहा है तो वो भी रिएक्ट कर दो, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे एक्शंस डिफाइन करने में। एक बार मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने रो ऐड करा, रो में हमने दो टेक्स्ट फील्ड ऐड करी, हमने उनका नेम चेंज करा, देन हिंट टेक्स्ट चेंज करा एंड पैडिंग चेंज करी। देन हमने आइकन बटन डाला, आइकन बटन का हमने आइकन चेंज करा। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? जिन जिन का होगा एक बार रिएक्ट कर दो वापस से। ओके, नाइस नाइस नाइस। So now let's go to this press icon. So go to the press icon and click on action. Properties panel में आपको यहाँ पे action button दिखेगा। So click on this and open action flow editor. Click on tap. तो बेसिकली इस प्रेस आइकन को दबाने पे क्या क्या होना चाहिए that we would define here.
जैसे कि पिछले सेशन में हमने सबमिट बटन पे करा था, सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, बट इसका लॉजिक काफी सिंपल है। तो इफ आई गो टू डॉक, हमारे होम स्क्रीन के यूआई में टॉप रो डन है। देन ऐड बटन लॉजिक, अब हम ये ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉजिक इज, जो हमारा यूआरएल है हमें इसे शॉर्टन करना है। सो लेट्स गो टू हियर, ऑन टैब, ऐड एक्शन। अब एक्शन है हमारा कस्टम एक्शन। तो इफ यू से यहाँ पे कस्टम एक्शन का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस एंड वी हैव शॉर्टन यूआरएल। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे अब हमें एक इनपुट देना है। तो इनपुट देने के लिए go to this orange icon, then go to widget state, and you have link field. So click on this. So जो हमने as a text input करा था link, ये हमने input दे दिया है to the shorten URL function. तो इसको ऐड करने के लिए मैंने क्या करा, click on this, go to widget state, and widget state के अंदर आपको अपना text field मिल जाएगा। एंड नाउ इट्स एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। तो जो आउटपुट हमें फंक्शन रिटर्न करेगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो लेट्स नेम इट एज शॉर्ट यूआरएल। तो किस किस का ये वाला कस्टम एक्शन डिफाइन हो गया। बेसिकली हमने ऑन टैब पे कस्टम एक्शन चूज करा एंड वी क्लिक्ड ऑन शॉर्टन यूआरएल जो हमने डिफाइन करा था पहले। देन इनपुट के अंदर हमने ऐड करा है फ्रॉम विजिट स्टेट हमारा टेक्स्ट फील्ड, एंड आउटपुट का हमने नेम दिया है शॉर्ट यूआरएल। और भी अगर किसी का हो गया है तो आप चेक कर दो। नाइस। सो हमारा फर्स्ट एक्शन डिफाइन हो गया। नाउ लेट मी गो टू द डॉक। सेकेंड एक्शन इज बैकएंड कॉल। तो जो भी हमने चेंजेस करे हैं, जो हमने शॉर्टन यूआरएल करा है, हमने इनपुट किया है, वी नीड टू ऐड इट टू द बैकएंड। तो क्लिक ऑन दिस प्रेस आइकन, ऐड एक्शन, एंड गो टू बैकएंड एंड डेटाबेस जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, एंड डू फाइल स्टोर एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट। हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो हमने प्रेस को दबा के एक नया एक्शन डिफाइन करा, उसके अंदर भी वेंट टू बैकएंड एंड फाइल स्टोर। अब करेक्शंस के अंदर हमें टास्क के अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। सो लेट मी सेलेक्ट टास्क एंड ऐड फील्ड्स। तो फिर अपने पास टाइटल आ गया। तो लेट मी क्लिक ऑन टाइटल। टाइटल पे क्लिक करने के बाद अपने पास आ रहा है टाइटल का नेम एंड उसको क्या वैल्यू देनी है हमें। तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्रॉम अ वेरिएबल। हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देती, हमें एक वेरिएबल से वैल्यू उठानी है। तो क्लिक ऑन फ्रॉम वेरिएबल एंड आप इसको क्लिक करोगे तो यू हैव दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो नाउ वी नीड टू फाइंड कि हमारी वैल्यू कहाँ पे है। सो सेम थिंग, हम विजिट स्टेट पे जाएंगे एंड वी हैव ऐड टाइटल। क्लिक ऑन दिस एंड जो भी इनपुट हमारा टाइटल फील्ड से आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सेम चीज करेंगे हम दूसरे के लिए। तो नाउ वी हैव यूजर आईडी। क्लिक ऑन यूजर आईडी एंड इसको हम सेट करेंगे फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन द यूजर रेफरेंस।
तो अगर आपको याद हो यूजर आईडी हमारा एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस टाइप का है, तो कंफर्म। टाइटल ऐड करने के लिए हम विजिट स्टेट पे गए एंड क्लिक्ड ऑन द टाइटल फील्ड, एंड यूजर आईडी ऐड करने के लिए हम गए टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, एंड उसमें से वी एडेड द यूजर रेफरेंस। किस किस की ये दोनों चीजें ऐड हो गई? ओके नाइस। So now let's go to add another one, and this time it's link. तो लिंक हमें चाहिए शॉर्टन यूआरएल से, एंड इफ यू रिमेम्बर हमने शॉर्टन यूआरएल का जो आउटपुट था वो शॉर्ट यूआरएल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा था। तो लेट्स गो टू अ फ्रॉम वेरिएबल, एंड अब ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो इफ यू सी हमारे पास एक एक्शन आउटपुट करके मेन्यू है, तो क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ पे वी हैव द शॉर्ट यूआरएल वेरिएबल। क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे ऐड हो गया। तो जितने भी एक्शंस के आउटपुट्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द एक्शन आउटपुट मेन्यू। सो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। गो टू एक्शन आउटपुट्स and short URL confirm. Now add another one. We have the date, and date हम from variable लेंगे, and this time we have date time from Unix. So click on this and confirm. Okay, so let me select microseconds, and okay, so date time from timestamp configuration is invalid. कोई बता सकता है ये एरर क्यों आ रहा है? Date time from timestamp configuration is invalid. So if you see हमें बस दो चीज़ें होती है। फर्स्ट इज डेट टाइम टाइप, जो कि फ्लटर एंड डार्ट डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको डार्ट में डेट यूज करनी है यू यूज द डेट टाइम, बट आपको अगर फायर बेस में स्टोर करना है सो यू यूज द टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इज यूज बाय फायर बेस एंड डेट टाइम इज यूज बाय द डार्ट लैंग्वेज। तो इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं, and now let's search for something that is related to Firebase. Edit. Data into a Unix timestamp. Hmm. This is the first time मुझे ever आ रहा है. Let's try to debug. Let me change my previous project. If I go to press icon, actions, tap on actions, backend, date, we have the Firestore server timestamp, right? So let's add the same thing. We have from variable and we have Firestore server timestamp. So इसने automatically fetch कर दिया कि अगर हमारे पास डेट टाइम एज अ वेरिएबल है स्कीमा के अंदर एंड हमें फायर बेस के अंदर उसे स्टोर करना है, तो लेट्स स्टोर इट एज अ टाइम स्टैम्प। सो क्लिक ऑन दिस
एंड हमारा एरर चला गया। सो किस किस का बैकएंड कॉल रेडी है टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट? हमने टाइटल ऐड करा, then we added the user ID from the authenticated users, then we added the link from the shortened URL that we got from the custom action, then we added the date as a Firestore server timestamp. और किसी का इतना हो गया। अब एक छोटा सा लास्ट एक्शन बचा। ओके, तो लेट मी ऐड द लास्ट एक्शन एज वेल। तो जब ये सब हो जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, हमारा यूआरएल शॉर्टन हो चुका है, वी जस्ट नीड टू रीसेट इट। तो लेट्स गो टू रीसेट टेक्स्ट फीड्स। तो क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट कर दो आप टाइटल एंड लिंक दोनों को। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं प्रेस आइकन पे दबाऊंगा एंड फायरबेस से मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ये दोनों फीड्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वापस से। So add this reset form fields and select these two and click on close. So now if I see, मेरा backend call भी ready है and reset form fields भी ready है। किस किस का इतना हो गया है? ओके नाइस। तो हमारा लॉजिक पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड हमें बस यूआई में डिस्प्ले करना है हमारे टास्क। सेम चीज हमने लास्ट सेशन में भी करी थी, तो फटाफट करते हैं इसको। गो टू कॉलम एंड हमें टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड टेक्स्ट को लेट मी रीनेम इट एज टास्क एंड इसको ठीक है। ऑल्सो गो टू कॉलम एंड कॉलम पे जो हमारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट हमारे एलिमेंट्स स्टार्ट पर रेंज हो जाए। ऑल्सो क्विकली मैं एक और चीज़ करूँगा, कॉलम पे ही लेट्स डिफाइन अ पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट से 20 एंड राइट से 20। ऑल्सो विद दिस हम अपने जो हमने टेक्स्ट फील्ड में पैडिंग प्रोवाइड करी थी, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने रो में पैडिंग ऐड करी थी, तो लेफ्ट एंड राइट से मैं रो की पैडिंग रिमूव कर दूँ बिकॉज सेम पैडिंग मैंने कॉलम पे अप्लाई कर दिया। आई हैव द टास्क एंड इसका थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं टू टाइटल लार्ज। एंड अब हमें ऐड करना है लिस्ट व्यू। तो क्लिक ऑन कॉलम एंड ऐड अ लिस्ट व्यू। अब लिस्ट व्यू क्या करता है, इट टेक्स द डेटा एंड replicates it to the desired number। तो सपोज मेरे पास 10 टास्क है, तो ये 10 टाइम्स अपने एलिमेंट्स को रिप्रोड्यूस कर देगा। तो क्लिक ऑन लिस्ट व्यू, गो टू बैकएंड। तो जो हमारा थर्ड टैब है, फर्स्ट इज द प्रॉपर्टीज, सेकंड इज एक्शंस एंड थर्ड इज बैकएंड क्वेरी। तो बेसिकली इस लिस्ट व्यू पे हमें बैकएंड से अपने टास्क को फेच करना है। गो टू क्वेरी करेक्शन, सेलेक्ट टास्क एंड और सर अब हम एक फिल्टर लगाने वाले हैं। ये फिल्टर हमने लास्ट सेशन में नहीं लगाया था, बट हियर वी आर गोइंग टू ऐड इट। तो जो टास्क है ना,
वो हमें बस अपने यूजर के लिए ही चाहिए। वी डोंट वांट कि बाकी यूजर के जो टास्क है वो भी हमारी ऐप में दिखे। तो इसे बैकएंड क्वेरी के अंदर मैं एक फिल्टर लगाऊंगा। क्लिक ऑन दिस एंड यूजर आईडी क्लिक ऑन दिस इक्वल टू एंड वैल्यू में हम प्रोवाइड करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस, कंफर्म। तो बेसिकली हमने बैकएंड से सारे टास्क फेच करे हैं। देन वी हैव एडेड अ फिल्टर दैट इज जो यूजर आईडी है दैट इज इक्वल टू द ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी जो हमें फायरबेस से मिलती है एंड क्लिक ऑन कंफर्म। किसने इतना कर दिया है? इफ यू वांट मैं ये वाला स्टेप फटाफट रिपीट कर देता हूँ। क्रिएट अ रेस्ट व्यू एंड रेस्ट व्यू हम बैकएंड क्वेरी पे जाएंगे। बैकएंड क्वेरी में हम गेट करेक्शन पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन टास्क एंड हम एक फिल्टर ऐड करेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू द ऑथेंटिकेटेड यूजर रेफरेंस। अगर ये किसी का हो जाए तो आप रिएक्ट कर देना। ओके नाइस एंड लेट मी गो टू द डॉक अगेन। तो हमारा ये वाला स्टेप हो चुका है। देन हमने ये बैक एंड क्वेरी वाला स्टेप भी कर दिया है। अब बस हमें छोटा सा यूआई बनाना है टू डिस्प्ले द टास्क। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनसाइड द रेस्ट व्यू यहाँ पे हमें ऐड करेंगे कंटेनर। सो वी हैव द कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर इफ यू सी बेसिकली हमारे पास एक रो है। रो के अंदर फर्स्ट वी हैव अ कॉलम एंड कॉलम में वी हैव थ्री आइटम्स, द टाइटल, द shortened URL and the date, and on the right hand side we have the checkbox. So हम ये वाली यूआई फटाफट बना लेते हैं। Inside container add a row. Now inside this row add two items. First is column and हम रो पे वापस से जाएंगे and add a checkbox. Yes. थोड़ा सा हम स्पेसिंग कर देते हैं। तो इनसाइड रो क्लिक ऑन रो एंड मेन एक्सेस में मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा दैट इज स्पेस बिटवीन। तो ये क्या करता है, एलिमेंट्स को एकदम ही एंड्स पे डिवाइड कर देता है। एंड इस रो में हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इतना हो गया। तो बेसिकली हमने कंटेनर बनाया है। कंटेनर के अंदर वी हैव द कॉलम एंड देन वी हैव अ चेक बॉक्स। तो अब हम सिंपली इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। सो क्लिक ऑन कॉलम एंड यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, देन another one एंड एक और। तो अब हमारे पास तीन टेक्स्ट है एंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो क्लिक ऑन कॉलम एंड दिस वन।
और मे बी दिस वन। यस। सो दिस इज स्पेस इवनली। इसके जो मेन एक्सेस है उस पर हमने स्पेस इवनली ऐड कर दिया। किसी का इतना हो गया? ओके नाइस। एंड अब हम फटाफट इन तीनों को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज आर टाइटल। तो मैं फर्स्ट टेक्स्ट पे क्रिएट क्लिक करूंगा एंड ऑन द टॉप यहाँ पे टेक्स्ट है ना, तो क्लिक ऑन द आइकन टास्क डॉक्यूमेंट्स एंड टाइटल। तो जो भी टाइटल फेच होगा हमारे टास्क डॉक्यूमेंट के अंदर वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। सेकंड इज अ shortened URL। So same thing, go here, task document and link. Third one is the date. Now if you see, जो डेट थी हमने फायरबेस के अंदर तो फायरबेस टाइम स्टैम्प स्टोर करा था, हमने वहां पे उसे फॉर्मेट नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही इसको फॉर्मेट करेंगे। तो हम थर्ड वाले टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, गो टू द मेन्यू एंड यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड फंक्शंस, कस्टम फंक्शंस। तो अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, इनलाइन फंक्शंस के नीचे यू हैव द कस्टम फंक्शंस। एंड अब हम अपना यूज करेंगे कस्टम फंक्शन जो डिफाइन करा था। तो क्लिक ऑन कस्टम फंक्शन एंड फॉर्मेट डेट टाइम। अब इसके अंदर हमें इनपुट देना है एंड इनपुट आएगा हमारा जो फायरबेस से फेच करा है हमने। सो क्लिक ऑन दिस टास्क डॉक्यूमेंट डेट कंफर्म एंड कंफर्म। हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक डिफॉल्ट वेरिएबल का आइटम है। सो लेट मी ऐड डेट हियर एंड कंफर्म। सो दिस इज रेडी। अब ना एक बार से टेस्ट कर देते हैं, तो लेट मी लॉन्च इट इनटू टेस्ट मोड। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो कि मैंने डेट कैसे ऐड करा या फिर टाइटल या रिंग कैसे ऐड करा है। और अगर किसी का हो गया तो आप हैंड रेज कर दो या रिएक्ट कर दो। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊं, नाइस, स्टेप वन इज डन, स्टेप टू इज डन, देन हमारा ऑन स्क्रीन रेडी है, हमारा फायरबेस में करेक्शन रेडी है, देन हमारा कस्टम कोड भी रेडी है, होम स्क्रीन का रेडी, होम स्क्रीन का यूआई इज आल्सो रेडी। वी हैव वन थिंग लेफ्ट, दैट इज द चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स इज समथिंग दैट आई वांट कि आप खुद इम्प्लीमेंट करो। मैंने इसका पूरा लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है। सो चेक बॉक्स में क्या होता है, इफ यू क्लिक ऑन दिस, दो आइटम्स होते हैं। फर्स्ट एक्शन इज ऑन टॉगल ऑन एंड सेकेंड एक्शन इज ऑन टॉगल ऑफ। सो इफ आई गो हियर एंड ओपन द एडिटर, मेरे पास दो एक्शंस है, ऑन टॉगल ऑन एंड ऑन टॉगल ऑफ। तो अगर आप चेक बॉक्स को ऑन करते हो तो फायरबेस में क्या होना चाहिए, इस डन ट्रू हो जाना चाहिए, राइट। एंड अगर आप ऑन टॉगल ऑफ करते हो तो फायरबेस में इस टर्न फॉल्स हो जाना चाहिए। तो ये ही लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है जो कि मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है। और सर जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू वुड बी इक्वल टू द वैल्यू जो कि फायरबेस में स्टोर है।
So click on checkbox and यहाँ पे you have initial value as task document and is done. तो जो भी is done की value Firebase से fetch होगी, that would be the initial value of the checkbox. Okay, and meanwhile हमारा app भी run हो चुका है, तो let me show you. So this is the application and let me sign in. Create account. Post. Okay, so we have an error. Let me see. Email is already registered. Okay. So it gives a error कि हमारा जो Firebase है that is on the read only mode. तो हमें थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट जो रूल्स होते हैं उनको ट्विक करना पड़ेगा. So go to our application, then go to Firestore and यहाँ पे settings है. Go to settings and हमारे पास है Firestore rules not deployed. इसको मैं फटाफट डिप्लॉय कर देता हूँ. Click on deploy. Basically हम Firestore पे आए हैं and we have clicked on the settings and then deploy Firestore rules. तो अब मैं इसको इंस्टेंट रीलोड कर देता हूँ. किस किस का बाय द वे इतना हो चुका है? मीनाक्षी, प्रीति, अगर कोई एरर आया है तो बता दो. Please repeat the Firestore step. Okay. So basically जो connect के नीचे जो first tab है that is Firestore, उस पे क्लिक करो and go to the settings. तो ऊपर आपको settings दिख जाएगी and inside this Firestore rules already set है, आपको उस deploy करना है इनको. तो click on the deploy button and ये deploy हो जाएगी. So if I come back to the document, checkbox IBT और implement कर लोगे खुद से. So the last step is place for deployment. Before that, after अपनी email IDs भेजी थी, right? So let me add it to the testing. So this is the application मैंने जो deploy करी है and अपने पास एक testers की list है. So let me quickly add your emails.
और किसी को भी अपनी ईमेल आधा टेस्टर ऐड करवानी है तो यू कैन सेंड इन द चैट. Okay, so that was it. And save changes. And this is the URL. So जितने भी testers हैं, you can go to this URL अपने फोन पे एंड जिस प्ले स्टोर अकाउंट से आप लॉग्ड इन हो ना फोन पे उसी से ये ओपन करना एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. तो जो एप्लीकेशन हमने आज बनाई है ये उसी का ही डेमो है एंड यू कैन एक्सपीरियंस कि ये कैसे वर्क कर रही है. Meanwhile, let me show you the tested application. तो एक टाइटल ऐड करते हैं. So आकांक्षा ने अभी रिसेंट एक आर्टिकल लिखा है एंड आई वांट टू रीड इट बट अभी टाइम नहीं है. So let's name the task as Akansha's blog read and हम URL भी डाल देते हैं इसका. Click on this and paste it here and click on add button. So see हमारा task ऐड हो गया. We have the title, we have the tiny URL, shortened URL, and we also have the formatted date. I can check in and check it. तो हमारी एप्लीकेशन रेडी है. किस किस का टेस्ट हो चुका है एप्लीकेशन या फिर बिल्ड हो चुका है? किसी ने यहाँ तक फॉलो करा? ओके नाइस. एंड सब कुछ सही वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा. नेक्स्ट. सो हमारा एप्लीकेशन रेडी है. नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द फाइनल पोर्शन दैट इज द प्ले स्टोर डिप्लॉयमेंट. So let me show you how it's done. So Play Store deployment के these are the steps. First is create an app on Play Console. So let me go to my console and these are all the applications and we are going to create a new app. Let's name this as Do Later and it is an application, it is free and I accept all the terms and conditions and create app. Acha, one thing, for this process, you don't need to follow it because I know Play Store account नहीं होगा सबके पास. And I believe mobile deployment is a paid feature in FlutterFlow. So this is just for demonstration. तो मैं फटाफट demonstrate कर देता हूँ. So we have the application ready and you can define कि आपके ऐप का कौन कौन टेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी ऐप के बारे में कौन सी कंटेंट रेटिंग है, टारगेट ऑडियंस क्या है, that you can define here. Now the second step is open Google Cloud Console. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, गूगल क्लाउड कंसोल पे हम ना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि फ्लटर फ्लो ने बनाया एंड उसके अंदर हम सर्विस की डिफाइन करेंगे. सर्विस की बेसिकली क्या होती है, अगर आपके किसी भी प्लेटफॉर्म को जैसे गूगल प्ले स्टोर का प्लेटफॉर्म है उसे मैन्युअली एक्सेस नहीं करना, यू नीड टू एक्सेस थ्रू अ सॉफ्टवेयर. So that you can do using a service key. Let me show you by example. जैसे this is the project, this is the do later project. So सबसे पहले हम इस पे Android API enable करेंगे. Google Play Android Developers API. मेरे में already enable है, that fits choose the manage option. Inside this अब हम credentials define करेंगे. So we can create credentials, हम API की create कर सकते हैं, हम service account create कर सकते हैं.
So I have already created a service account with this name. So we have the service account, right? So let's click on this. I also have the keys here. तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड अब इस सर्विस अकाउंट को ना हमें गूगल प्ले स्टोर से कनेक्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? गो टू गूगल प्ले कंसोल एंड इनवाइट सर्विस अकाउंट। तो मैं अपने कंसोल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे बस ऑप्शन है टू इनवाइट यूजर्स एंड परमिशंस एंड इनवाइट न्यू यूजर। तो हमने डू रेटर आपको एज अ सर्विस अकाउंट यहाँ पे इनवाइट कर रखा है। तो इससे बेसिकली क्या हुआ है, हमारा जो फ्लटरफ्लो ने गूगल क्राउड पे प्रोजेक्ट क्रिएट करा है दैट वी हैव कनेक्टेड टू द गूगल प्ले कंसोल। सो अब फ्लटरफ्लो डायरेक्टली गूगल प्ले कंसोल पे अपडेट्स पुश कर सकता है, हमें मैन्युअली पुश करने की नीड नहीं है यूजिंग द सर्विस अकाउंट। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव डन राइट। एंड एक स्टेप है अपलोड जेसन की टू फ्लटरफ्लो। अब ये क्या होता है? सो बेसिकली आपका जो ऐप होता है ना वो साइन होके गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च होता है। साइन इज बेसिकली आप ऑथोराइज कर रहे हो कि ये ऐप मैंने बनाई है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो आपकी कीज के साथ वो साइन होता है। सो जो कीज मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है वो कीज मैं अपलोड करूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सेटिंग्स में गो टू मोबाइल डिप्लॉयमेंट एंड यहाँ पे आपके पास सर्विस अकाउंट कीज ऐड करने का ऑप्शन है। तो विद दिस आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन सेलेक्ट द ट्रैक कि इंटरनल टेस्टिंग पे करना है, अल्फा बीटा या प्रोडक्शन पे। सो इंटरनल अल्फा बीटा आर द टेस्टिंग मोड्स एंड प्रोडक्शन इज द लाइव वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आई कैन सी कि 5-6 बंदों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया एप्लीकेशन। तो किस किसने इंस्टॉल करा है एक बार हैंड रेज कर दो। ओके नाइस। एंड आपने यूज करा एप्लीकेशन? ऑल्सो किसी और को भी इसका एक्सेस चाहिए तो जस्ट ड्रॉप योर ईमेल इन द चैट। ओके सो हाउ वाज द एप्लीकेशन? फ्लटरफ्लो में बने हुए एप्लीकेशन एंड बाकी में कुछ डिफरेंस लगा या फिर इट्स बेटर देन अदर एप्लीकेशंस? गिव मी एक्सेस एज वेल। ओके डू यू हैव एन एंड्रॉइड डिवाइस राइट नाउ? ओके ओके। और किसको भी एक्सेस चाहिए तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। Yes, Naman, you can access the application from this URL. So we have also seen now how to deploy your application on Play Store. And now the last thing is some extra things that you can add it to the application. First is push notifications. So if you see,
सेटिंग्स में we have the push notifications. तो आप Firebase FCM को यूज करके एक रिमाइंडर डाल सकते हो एवरी डे दैट यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल और you have to do this task. So you can add this or you can add confetti on task completion. तो ये चीज हमने सेकंड सेशन में सीखी थी हाउ टू यूज लाइव एनिमेशंस राइट. तो जब भी आप कोई टास्क को कंप्लीट करते हो यू कैन ऐड कॉन्फेटी ऑन द स्क्रीन. देन यू हैव रीडायरेक्ट ऑन यूआरएल क्लिक. सो ये चीज हमने सेशन 1 में सीखी थी हाउ टू रीडायरेक्ट ऑन अ बटन क्लिक ऑन अ यूआरएल क्लिक. So you can also add this to the application. So that was pretty much about the app, and now we can continue with the other stuff. Can we deploy the app on web so that people can share the links if they have created? Yeah, sure, sure. तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ. Go to settings and then go to platforms and enable web. So once you enable web, go to web deployment. तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म पे गए, हमने वेब इनेबल करा. सेकंड इज डिप्लॉयमेंट एंड क्लिक ऑन पब्लिश. अब पब्लिश करने के बाद यू कैन रिफ्रेश द स्क्रीन एंड उसके बाद यू कैन सी द ऑल द कमिट हिस्ट्री कि कैसे पब्लिश हुई है एंड दिस वुड बी योर यूआरएल. Also, I am sending a form where you can add your publish URLs. If you have any doubts, please you can ask. After this, we will be having a quiz and then we can end the session. Are you deploying your app on web? Is there anybody who is deploying? You can just raise your hands or react or something. Yash, can you share the link of that form? Yeah. How many of you were able to access the app that Yash has given access you for? Did you run it on Android or iOS? I think Preeti did. Okay, now one also said it's working fine. Cool. So Yash has shared the link for the Google form. If you have published your apps that you created today, you can put it in the chat and you can add it in this Google form as well. I'm sharing a feedback form for you all, and we would love for you to please give us the feedback. Okay, Preeti shared the app. Yash, can we see? Yes. So I've shared a feedback form as well. Please fill it because this is the last session for the FlutterFlow Builder Series, and we would love to know how was it. Is there anything we could have done better? So please fill that feedback form.
nice. Okay. So what should I add here? Any suggestions? Any Medium article or a news article or anything. Let's add this URL. Yes, so we have the title and everything, shortened URL. Nice. This is nice. Thank you, Preeti. Uh, I think I can share you the Discord link. Those who are not on Discord, please join our Discord for the future sessions, and you can ask your doubts there as well. I'll drop the link in the chat. Okay, do you have any questions, or can we move forward with the quiz? I think no questions, so let's move forward. Yes, Yeah, everybody is waiting for the quiz only. yeah. Thank you, Swatch. I am not sure whether this is your name or is this the ID that you joined with. Thank you so much. So Yash has shared the link for the quiz. Okay, Anupam is it? It is okay. Anupam, is it the same Anupam which was there in session 2, I guess? Okay, okay, okay. Okay. The Anupam who I forgot about meeting in Deaf Fest, Noida, I guess. But now I remember. Yash and host. Okay, people don't know me, I guess. I'll share my LinkedIn. But first, I'll play the quiz because Yash told me today that the quiz is very interesting. So I'm going to play the quiz. I don't know, but what is the quiz all about? But I want to play with them and everyone. So has anybody joined the quiz? I think you have to start first, then people will be able to join. Okay, yeah. I've shared my LinkedIn. Those who don't know me, they can know me now. अरे me too मैं भी भेजता हूँ. Yeah, everybody knows you now, Yash. Yash, are you on the quiz screen? Because I think your screen is stuck. Or Yeah, just a second. okay, you were sharing our socials. Okay, Priorities. yeah. You all can share your LinkedIn or Twitter or any Yeah. social platform that you want to share here in the chat so that you all can get connected as well. We don't mind that. How many of you want us to conduct an in person event for FFDJ New Delhi? Preeti, Himanshu, Yash, Meenakshi. Yeah, we are planning one very soon, probably next to next month or probably next month. So we would love to see you all there. Join our meetup group as well. We'll be sharing everything there and on Discord. I'll share
Rajasthan meetup group as well. If you don't have that already, I don't know if you have it or not, but I'll share. I can, but only after 15th August. Yeah, because we have all the festivities, no? Raksha Bandhan and then Independence Day, so everybody would be busy, I guess. Yeah, we are going to plan it after that only, so don't worry. Would you like to have like 3 or 4 sessions in one day, or would you like to have like 2 sessions in one day and networking afterwards? Yeah, Rishabh, we would love to have you in India. I know you are in London, but we would love to have you in India. Are you all from Delhi or are you from outside Delhi? Is there anyone who is outside Delhi? I mean, Delhi NCR. I'm also from outside Delhi, as in Noida, so I mentioned Delhi NCR. Okay, I'm from Gurgaon, cool. Naman is from Rajasthan. Himanshu is from Rajasthan, Jaipur. Jaipur. So, are you all going to travel for the event if we do it in person? Because that is going to happen in Delhi NCR only. Okay, Naman, Himanshu, they both can travel. How cool. Yeah, we would love to have you all. 3 cities rotation, including Delhi. I think Anupam travels a lot then. Okay, Rishabh is from Varanasi, but he is in London currently. It's a beautiful place, Varanasi. And London too. I've never been to London, but yeah. I joined from FFDG, but I'm not FFDG. I am Akansha, by the way. Is there anybody else who is going to join? I'm I just guess we can Yeah, start. I'm just chit chatting because I want people to join today's quiz. That's why I just shared the link again if anybody would love like to join. And we have 7 questions today. So how Yash, we have 7 questions, as in we had 5 only in the previous sessions. What is special today? I mean, I like the question, so Yeah, like okay, I like the questions today, so I'm going to make more. Cool. Yeah, we can start, I think. okay. So here's the first question. WhatsApp dev group. Cry to God. Are you serious? We have people click on this as well. 25% have clicked on the Oh, last option. nice. Next question. Cut the link like a boss. You make the choices so obvious now. Eliminate the fun ones and click on the serious ones. Next question. I like the first option. Yeah, that 17% people is me. Already done by mom. बेटा तुमसे ना हो बेटा तुमसे ना हो पाएगा. पाएगा. Most of the time तो वही होता है चेक बॉक्स में. It's like yeah, it's the same thing. हमसे नहीं हो पाएगा भाई. चाय. डेट कर भाई.
New virus in India is called Sayara. Yeah, everybody has got the virus, I guess. People are getting FOMO because of this. I don't know why. OTP for love. Wow. Dinchak Puja. So I guess this is the last question. Celebrate with biryani. And you got a chicken one. Vegetarians getting offended in the chat. Oh, Preeti won. And I'm not in the leaderboard today. Cool. Thank you, Yash. And thank you everyone who joined today. I hope you all had fun learning something new today. We would love to see you in our future sessions. And we are soon going to plan one in person. So I would love to see you all there. Please join our meetup and Discord as we will be posting everything about the events there. So thank you so much, everyone. If you have any doubts, you can share with us in the Discord. And yeah, see you. Thank you. Bye, Thank you, everyone. everybody. Thanks for joining. Thank you, Yash. Bye. See you. Bye. Thanks, Rishabh.